Hello, students. Welcome to social science class. Today, we are, as you know, doing with political science. And today's topic is what makes elections in India democratic. What makes elections in India democratic? इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक किस तरह से रहते हैं? कौन सी चीज़ें होती हैं जो उनको डेमोक्रेटिक बनाती हैं? इलेक्शन कमिश्नर CEC is appointed by President of India, but once appointed, the Chief Election Commissioner is not answerable to the President or the government, even if the ruling party or the government does not like what the Commission does. It is virtually impossible for it to remove the CEC. Very few election commissions in the world have such wide ranging powers as the Election Commission of India EC takes decision on every aspect of conduct and control of elections from the announcement elections to the declaration of results. It implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violates it. During the election period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of government power to enhance its chances to win elections or to transfer some government officials. See, we have about election commission, chief election commissioner. Chief election commissioner is appointed by President of India. President of India appoints chief election commissioner. But when once he is appointed, he's not answerable to even President or the government of India. Even if ruling party, the people in power cannot do anything to bring the commission or the chief election commissioner or the election commissioners under the control. It becomes virtually impossible for the government or the ruling party or for the president very few election commissions in the world have such wide ranging powers as election commission of India. जितने पावर्स इंडिया के इलेक्शन कमीशन के पास हैं इतने इलेक्शन कमीशन किसी भी दुनिया में बहुत कम इलेक्शन कमीशन हैं जिनके पास इतने पावर हैं. Election Commission takes decisions on every aspect to conduct and control elections from the announcement of elections to the declaration of results. इलेक्शंस के रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स होते हैं इलेक्शन को कंडक्ट कराने से लेके अनाउंसमेंट से लेके डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स तक सारे इलेक्शन कमीशन करवाता है. इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और द पार्टी हु वायलेट्स इट. कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट करता है और जो भी वायलेट करने वाली पार्टी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है. During the election period, the Election Commission can order the government to follow some guidelines. इलेक्शन पीरियड के दौरान में इलेक्शन कमीशन जो है can order the government to follow some guidelines to prevent use of and misuse of government power to enhance its chances to win election or to transfer some गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. इलेक्शन के दौरान गवर्नमेंट के लिए कुछ आर्डर्स आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसके चांसेस कम करने के लिए कि वो अपने पावर का यूज़ या मिसयूज़ ना करे, अपनी पार्टी को जितवाने के लिए अपने असर रसूख के लिए इस्तेमाल ना करे या लोगों को ट्रांसफ़र मुलाजम को ना करे.
When on election duty, government officers work under the control of election commission and not the government. जब इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं तो गवर्नमेंट मुलाजम जो होते हैं ऑफिसर्स जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंडर होते हैं, गवर्नमेंट के अंडर नहीं होते. द last 25 years or so, the election commission has begun to exercise all its powers and even expand them. It's very common now for the election commission to reprimand the government and administration for their lapses when election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths or even on entire constituency. They order a repoll. The ruling parties ruling parties often do not like what the election commission does, but they have to obey. This would not have happened if the election commission was not independent and powerful. अब इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन दिन ब दिन अपने पावर का दायरा जो है बढ़ाते जा रहा है और अपना जहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से लैप्सेस होते हैं इलेक्शंस के दौरान तो उस पर एक्शन लिया जाता है. और अगर इलेक्शन में अगर कभी लगे कि किसी जगह पे पोलिंग जो है वो फेयर नहीं हुई, धांधली हुई या अच्छे से इलेक्शंस नहीं हुए हैं किसी कंस्टिट्यूंसी में, किसी पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन में, तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन रीपोलिंग का ऑर्डर भी देती है, रीपोल कराया जाता है. और ऐसा नहीं होता अगर इंडिया का इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट ना होता. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. We get to read a lot about unfair practices in elections. Newspapers and television reports often refer to such allegations. Most of these reports are about following. हमने सुना है, देखा है न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में या बाकी न्यूज़ टेलीविज़न पे एलिगेशंस होते हैं रिगार्डिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस. और यहाँ पे ये किन किन जगहों पे ये चीज़ें होती हैं. इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन दी वोटर लिस्ट. वोटर लिस्ट में असल नाम जो होते हैं वो हटाए जाते हैं, ऐसे ही डुप्लीकेट नाम दिए जाते हैं, फर्जी नाम दिए जाते हैं. मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी कभी कभी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का मिसयूज़ कर लेती है, ऑफिशियल्स का मिसयूज़ कर लेती है. एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज़. बड़ी पार्टीज़ या बड़े पैसे वाले लोग जो होते हैं पैसे का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं. एंड intimidation of voters and rigging on the polling day. Intimidation of voters and rigging on the polling day. Polling day पे जो हंगामा किया जाता है. Many of these reports are correct. We feel unhappy when we read or see such reports, but unfortunately they are not on such a scale so as to defeat the very purpose of elections. This becomes clear if we ask a basic question: can a party win an election and come to power not because it has popular support but through electoral malpractices? This is a virtual question. Let's carefully examine various aspects of this question. ये जो रिपोर्ट्स आती हैं इसमें बहुत सारी सच भी होती हैं. कभी ऐसा भी हो कि कभी किसी पार्टी का या कोई आदमी ऐसा है कि जो
अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं आया जीत के, बल्कि इलेक्टोरल मॉल प्रैक्टिसेस जो होती हैं, गलत रास्ते जो अख्तियार किए जाते हैं, पैसे का इस्तेमाल या बाकी चीज़ें, तो उस तरीके से आ जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिस पे हमें आगे पढ़ना है। Independent Election Commission. One simple way of checking whether elections are fair or not is to look at who conducts the elections. Are they independent of government, or can the government or the party, or can the government or the ruling party influence or pressurize them? Do they have enough powers to be able to conduct free and fair elections? Do they actually use these powers? The answer to all these questions is quite positive for a country. In our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission. It enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoys. See, कि कोई कैसे जीत के आता है, क्या वो सही से आया कि गलत से आया, इसके लिए हमें क्या चीज़ देखनी है कि आपके जो इलेक्शंस होते हैं वो कौन करवा रहा है, अपनी ये देखना है। क्या ये इलेक्शंस इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है, क्या इलेक्शन कमीशन करवा रहा है या गवर्नमेंट करवा रही है। अगर इलेक्शन कमीशन करवा रहा है तो क्या उस पर रूलिंग पार्टी का दबाव तो नहीं है, क्या रूलिंग पार्टी का असर और रसूख तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्या उनके पास इतने पावर्स हैं कि वो अच्छे से इलेक्शन करवा पाएँ, क्या वो सच में अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। इन सब क्वेश्चंस का आंसर जो है वो हमारे मुल्क में पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब कि हाँ, यहाँ पे इलेक्शंस इंडिपेंडेंट होते हैं, इलेक्शन कमीशन को पूरे पावर्स होते हैं कि वो कुछ भी कर पाएँ इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करने के लिए। और यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है वो उसके पास वो सारे पावर्स होते हैं जो यहाँ की जुडिशरी के पास होते हैं। So this is wise for the day. Have a nice day.